बैंड्स बाय रहमा अदनान। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में ठीक होंगे और मेरे ट्यूटोरियल्स देख के लूम बैंड बनाने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और एक्साइटिंग लूम बैंड डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसका नाम है डबल क्रॉस लूम बैंड ब्रेसलेट। और ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मैं इसके बहुत ईजी स्टेप्स में बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आगे चलने से पहले आपको पता है ना क्या करना है? मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड्स चाहिए, एक एस क्लिप, एक ओवल शेप्ड स्मॉल स्टैंड और एक हुक चाहिए। हमने अपना स्मॉल स्टैंड पकड़ना है। याद रखिए कि हमने इसके सिर्फ 4 पेग्स यूज़ करने हैं। फिर हमने अपना येलो बैंड पकड़ना है और उसको इसके ऊपर ट्विस्ट करके लगा देना है। फिर हमने अपना सिंगल पिंक बैंड पकड़ना है और उसको भी ट्विस्ट करके लगा देना है। फिर हमने अपना एक और येलो बैंड पकड़ना है और इसको हमने ट्विस्ट किए बगैर इसके ऊपर लगा देना है। फिर हमने अपना एक और पिंक बैंड पकड़ना है और इस तरह इसको भी लगा देना है। फिर हमने लास्ट येलो बैंड पकड़ना है और उसको भी लगा देना है, और लास्ट पिंक बैंड भी पकड़ना है और उसको इसके ऊपर लगा देना है। फिर हमने अपना हुक पकड़ना है और लास्ट येलो बैंड को ऊपर हुक कर देना है। फिर हमने लास्ट पिंक बैंड को भी इसके ऊपर हुक कर देना है। फिर हमने इन पिंक बैंड और येलो बैंड को भी हुक कर देना है। फिर हमने इनको नीचे पुश कर देना है और हमने अपना येलो बैंड पकड़कर इसके ऊपर ऐसे लगा देना है ट्विस्ट किए बगैर। फिर हमने अपना पिंक बैंड पकड़ना है और इसके ऊपर इसको लगा देना है और हुकिंग करनी है। लास्ट बैंड, याद रखिए कि हमने लास्ट बैंड को हुक करना है। फिर हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है जब तक हमारा ब्रेसलेट हमारे साइज़ का नहीं हो जाता। याद रखिए कि हमने हर स्टेप में लास्ट पिंक और या लास्ट येलो बैंड को हुक करना है। इस तरह इस पैटर्न को फॉलो करते करते हमारा ब्रेसलेट कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हमने इस पैटर्न को तब तक फॉलो करना है जब तक हमारा ब्रेसलेट हमारे साइज़ का नहीं बन जाता।
तो दोस्तों इस ब्रेसलेट को कंप्लीट करने के लिए आपने अपना हुक पकड़ना है और इन येलो बैंड्स को पकड़कर इस हुक के ऊपर कर देना है और इन दोनों पिंक बैंड्स को भी इसके ऊपर कर देना है। फिर हमने अपने हुक में इन सारे रबर बैंड्स को डालकर एक रबर बैंड पकड़कर इनको इसके ऊपर से गुजारना है और इसको उतार कर हमने इस रबर बैंड को पकड़ना है और एस क्लिप को इसके ऊपर लगा देना है। फिर हमने अपना कैप बैंड को भी इस एस क्लिप के ऊपर लगा देना है और हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। दोस्तों तो कैसा लगा आज का डिज़ाइन? ज़बरदस्त है ना? और अगर आपको लूम बैंड की कोई किट या टूल की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं दोबारा आऊँगी नए डिज़ाइन और नई टेक्निक्स के साथ। मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स बाय राहिमा अदनान।